channel. My name is Hina Sharma, and in this channel you will be getting videos regarding the cabin crew interview experience which I post regularly whenever I attend my interviews. So today I will be sharing my interview experience with Indigo Airlines, which I gave my interview in Saket, New Delhi on 23rd of August 2025. So let's start my experience. How was my experience? I reached the venue. There were some girls who were sitting in the waiting hall. So I was like wondering that भाई अभी तो 8:30 ही बजे हैं I'm sorry भाई अभी तो 8:30 ही बजे और 8:30 में भी इतने सारे candidates. So I will prefer to go prior than the given timing. So that's the tip number 1 which I made. सर है ना टोकन नंबर लिख रहे थे सब कैंडिडेट्स के रेज्यूमे में और मेरा टोकन नंबर था 44. एंड जीडी राउंड बोलो कैसे होता है, लाइक इफ़ समवन डोंट नो, एचआर तुम्हारे सामने बैठेगी एंड यू हैव टू मेक अ सेमी सर्कल. या अब जैसे मैं इधर बैठ गई, 2 लड़कियां इधर बैठ गई, 2 लड़कियां उधर बैठ गई, ऐसे तुमको ना सेमी सर्कल बना के बैठना होता है. और एचआर है ना तुम्हारे सीवी में से भी पूछ सकती है और एक रैंडम एक कॉमन क्वेश्चन दे सकती है, उसमें आपको बोलना होता है. लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एचआर व्हाट क्वेश्चन शी इज आस्किंग. So in my turn, I was the second one who was speaking. Like first one was a girl. मैंने नीचे मेंशन कर रखा था अचीवमेंट्स में that I cleared Air India SATs interview in first attempt. So ma'am raised a question in that like हिना ये AI SATs क्या है. Then मैंने explain करा कि ma'am this is Air India SATs which is tied up with the both Singapore Airlines and Air India. Then मैम like she was listening to me. फिर मैंने मैम को बताया कि मैम that was my first ever interview with Air India SATs for the position of the customer service. एंड बाद में मैंने उनको बताया कि मैम मैंने ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ये इंटरव्यू क्लियर कर दिया था एंड दैट वाज माय बेस्ट एवर. ऐसे ऐसे करके मैंने मेरा आंसर बता दिया. फिर मैम मेरे से पूछी कि हिना लाइक आपने ज्वाइन करा क्या वो कंपनी. मैंने बोला कि नो मैम आई डिडंट ज्वाइन बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू इज़ हेल्ड एंड आई जस्ट वांटेड टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस लेवल. सो फॉर दैट रीज़न आई जस्ट वेंट एंड गेव दैट इंटरव्यू एंड आई लिटरली हैड नो आइडिया दैट आई वुड गेट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. And she told me that why you want to join Indigo rather than joining that Air India SATs interview which you have cleared. And I told ma'am my dream airline is Indigo Airlines and I really want to make my career with Indigo Airlines as the position of cabin crew or with the ground staff. लाइक मैंने उनको ऐसे ही नहीं बोला कि मेरे को सिर्फ कैबिन क्रू के उसमें ही जाना है. मैंने बोला कि लाइक इवन इफ इट्स ग्राउंड स्टाफ आई एम टोटली अग्रीइंग, आई एम गोइंग विद दैट. देन मैम ने बोला कि ओके. Then ma'am asked me about my qualification, that is my education. I told that ma'am I have completed my higher secondary education from Chennai and currently I am pursuing my bachelor's degree in commerce from Rajasthan University. And then she told me thank you Hina, and I saw her that she was keeping my resume behind and all other girls resume she was just ऐसे उल्टा करके ऐसे रखती है ना, वैसे रख रही थी मैम बाकी सब लड़कियों का रेज्यूमे. एंड लाइक एक टाइम पे तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी कि भाई रिजेक्ट तो नहीं हो गई. फिर बाद में लाइक सिर्फ मेरा रेज्यूमे ऐसे रखा मैम ने और बाकी सब लड़कियों का रेज्यूमे ऐसे रख दिया था. एंड देन एट द टाइम लाइक एक हिंट मिल गई थी मेरे को कि या यू हैव बीन सेलेक्टेड इन जीडी राउंड. एंड शी टोल्ड मी दैट हिना लाइक यू हैव बीन सेलेक्टेड इन जीडी राउंड एंड योर नेक्स्ट राउंड इज कम्युनिकेशन राउंड, दैट इज यू विल बी हैविंग अ वर्चुअल इंटरव्यू एंड यू कैन गो दैट. लाइक दूसरे उस साइड में हो रहा था वर्चुअल इंटरव्यू. देन उसके बाद मेरी टर्न आई, मैं जाके बैठी, मैंने मैम को बोला हेलो मैम गुड मॉर्निंग. देन मैम ने भी बोला गुड मॉर्निंग. फिर मैंने मेरा नाम मैम ने बोला कि प्लीज़ टाइप योर नेम. देन मैंने टाइप करा मेरा नाम एंड शी टोल्ड मी ओके हिना. फिर शी टोल्ड मी दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैं ऐसे थी कि मतलब ओके. लाइक वर्चुअल राउंड शी क्रॉस क्वेश्चन माई ओन आंसर. यही होता है भाई वर्चुअल राउंड में. आई नोटिस्ड एवरी गर्ल्स आंसर, एवरी गर्ल्स इंटरव्यू विच वॉज टेकन ड्यूरिंग दैट डे. लाइक सबसे इंट्रोडक्शन पूछा, उसमें से क्रॉस क्वेश्चन करा. देन उस दिन मेरे को समझ में आ गया था कि तुम अगर आंसर दे रहे हो सो मेक श्योर दैट
यू आर गिविंग अ अप्रोप्रिएट आंसर जो कि तुमको आता है। एंड ग्रामर तो मेरे को आता नहीं था। मैम ने पूछा कि तुमने क्या सीखा उस कोर्स में। आई टोल्ड दैट मैम आई boosted my confidence level in that course, and even I learned grammar. The worst part of my interview experience is I waited for 3 to 4 hours for my communication round result. सीरियसली ब्रो, मैंने लाइक 3 से 4 घंटे मैंने बिताए सिर्फ मेरा रिजेक्शन वाला रिजल्ट 50% आई न्यू इट, लाइक मेरा रिजेक्शन में नाम आएगा, एंड वही हुआ। अगेन आई गॉट रिजेक्टेड इन वर्चुअल राउंड।